Now here's the example. What we are doing here, we are forming a differential equation by eliminating two constants, which is a and b from the relation which is given to us. Okay? Y equals a sin x plus b cos x. So अगर जितनी number of unknowns होंगे, ठीक है, उतनी numbers of equation required होंगी to eliminate the coefficients या constants. ठीक है, coefficients. Yeah, it's a arbitrary constant. So here we have given, हमने यहाँ पे क्या लिया है, इसका डेरिवेटिव again डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, दो, तो वी आर टेकिंग टू टाइम्स डेरिवेटिव. देन बाय सॉल्विंग इट, कैसे सॉल्व किया इसको, आई गेस ऐड किया है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. सो हमें जो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अकर हो चुकी है, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर फोर, at the general solution of the equation 1, right? Now the next example number 3 is find the differential equation of all parabolas whose axes are parallel to the axis of y. अच्छा, यहाँ हमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले हमें बनानी थी, अब हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो पैराबोलाज होती है उनकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन कुछ ये होती है, विच इज लाइक समहाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एंड वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन. ठीक है, हमने स्टार्ट ही जनरल इक्वेशन से करना है, देन वी विल टेक द डेरिवेटिव. देन अगेन हियर आर थ्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सो इधर कितनी इक्वेशंस बनेंगी, थ्री. ठीक है, थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमने इसको डिफरेंशिएट किया थ्राइस. ठीक है, now the last one which will gives us zero, this is a differential equation of all parabolas whose axes are parallel to the axis of y. Right, hope you all understand this topic. Thank you so much.